originated from the state of Kerala. വിജയ ശ്രീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ. हे एवरीबॉडी, सुगमानो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल दिया, यानी कि सुगमानो मतलब होता है कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ये है मलयालम का, और आज मैं मलयालम क्यों बोलने जा रहा हूँ। हाँ, तो कल था 29 अगस्त जो कि था ओनम, जो कि केरला में जो लोग मलयालम बोलते हैं, और भी काफ़ी साउथ में हमारे ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हैं उस रीज़न से स्पेशली रिलेटेड। तो वो लोगों ने कल एक स्पेशल असेंबली ऑर्गेनाइज़ की और बताया कि ओनम में क्या क्या होता है और किस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए थे, और ये देखना हमारे लिए भी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं, वो टोटली साउथ इंडिया से थे। तो ये इंडिया की खूबसूरती बोल सकते हैं, अपने देश भारत की खूबसूरती बोल सकते हैं, जो कि हमें ट्रेडिशनल वे में जोड़ता है और जोड़े रखता है। तो एक अतुल्य भारत की कल्पना हम इसी तरीके से करते हैं। तो बहुत मज़ा आया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं। तो देखिएगा किस तरीके से उन बच्चों ने प्रेजेंट किया असेंबली के दौरान अपने और हमारे भारतवर्ष के एक फेस्टिवल जिसका नाम है ओणम को। I request you to join your hands, close your eyes and say with us. Good morning, boys and girls. Good morning, sir. And also good morning, my dear teachers. Well, I am today representing the fraternity of the Keralites. And it gives me immense sense of pride to be representing the state of Kerala with my boys and girls. As you all know, today the state of Kerala is observing Onam. In fact, it's a 9-day festival, but today is the most auspicious, which we call it as Onam. Enjoy the moment. You may not understand some of the Malayalam typical words, but that's the beauty of this country. So just enjoy the moment, and also do pay a visit to the front office where these boys and girls will be putting up a rangoli, which we call as Pookalam. It is full of flowers. So please make it a point to come and visit that as well, right? And wish you all a very happy one to every one of you. Good morning, everyone. As we are celebrating Onam today, I am here to present an article before you. Onam is considered as an auspicious festival celebrated by all Malayalis. This is a traditional festival originated from the state of Kerala. Onam is one of the most religious festivals which is celebrated by Malayali community all over the world. Various cultural events from both races, politically, dance form, rangoli with flowers, which we call as Pookalam, colorful arts, food and traditional clothing take place during this festival. It is celebrated with great pomp and enthusiasm. Maveli naadu vaanidum kaalam manusharellarum onnu pole aapathannode vasikkum kaalam aapathannal kumudilla kaalam. So this is a song that represents the story of Onam. So let me get into it. This all starts from the king Mahabali, who was a devotee of Lord Vishnu. He is the son of Virochan and the grandson of Prahalad. He was righteous, charitable man and treated all his subjects equally. There was no poverty, crime and cruelty during his rule. Despite Mahabali being a demon king, the state was at its religious phase and the people adored him a lot. Mahabali's face gave the most of the devas. Afraid of losing power, they begged Lord Vishnu to aid them in stopping Mahabali. As a result, Lord Vishnu in his Vamana avatar as a Brahmin boy
visited Mahabali, who was doing yajna for Lord Vishnu's grace. Upon seeing the poor Brahmin boy, Mahabali asked him that what the boy desired. The boy responded that he needed land which can be covered in just 3 steps. Mahabali granted his wish. The thing is, he began to grow in a huge size, covering the entire universe in just 2 steps. Then Mahabali realized that it was not an ordinary boy, but Lord Vishnu himself. Seeing that there was no more land left, the king bowed before the boy, offering his head for the next step. Satisfied for the king's devotion, the Lord Vishnu blessed Mahabali and sent him to Padala, or the netherworld, with permission to visit his subjects every once in a year. And that is celebrated as onam. Here, it is believed that Trikakala is the place where Mahabali went into Padala. So, this is all about the onam story. May the blessing of King Mahabali shower upon you and your loved one this onam. Thank you and have a happy one. വിജയ ശ്രീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓ വരവേൽക്കാൻ ആളു വേണം കോടി തോരണങ്ങൾ വേണം വിജയ ശ്രീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓ With the short time that we got to present our culture before you, I hope that you got familiar with Onam. Once again, happy Onam to everyone. Thank you. ये था सेलिब्रेशन ओणम का इस तरीके से। और पर्सनली मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहली बार आप मलयालम सुन रहे हैं तो आपको कैसा लगा। हाँ, थोड़ा समझ में तो नहीं आएगा, इवन हमारे समझ में नहीं आएगा, बट वो जब बच्चे गा रहे थे, जिस वाइब्स जो आ रही थी उस टाइम पे, इट वाज सो पॉजिटिव वाइब्स और मज़ा आया हमें। और यही ट्रेडिशनल, मैंने कहा ना, हमें जोड़े रखता है इंडिया को, तो ये बहुत अच्छी बात थी देखने लायक। एंड वी सेलिब्रेटेड लाइक दिस। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए। Thank you.